Welcome back, good morning, and for most of us here and our distinguished panel, it's almost like good afternoon. Let's have a look at the headlines at 8 a.m. The Congress Eye, it looks like a hung parliament, and the Congress Eye needs to seek allies to form the next government. The BJP is also, the search is on for a new Chief Minister of Uttar Pradesh because the BJP is leading there. In Tamil Nadu, Jayalalitha is likely to be the next Chief Minister with a sweep across the entire state. Karunakaran in Kerala wins and is of course the hottest contender for Chief Minister of that state. And Mr. VP Singh maintains his lead in Fatehpur. इस कार्यक्रम के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मिलीजुली सरकार के लिए कांग्रेस को भागीदारों की तलाश। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री की खोज में जुटी। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना। श्री करुणाकरण चुनाव जीते और श्री वीपी सिंह की बढ़त बरकरार। Well, we've been looking mainly at leadings all through yesterday, and we've got a lot of results in overnight, and let's catch up with the results figures. These are actual MPs in the next Lok Sabha. Final results. We have results on 220 out of 511 seats. That's less than half still. And of those 220, the Congress Eye has got 126 safely in the Lok Sabha. That's up 34 since 1989. The BJP is the second largest party with 57 seats, but still down 6 seats since 1989. The Janata Dal only just picking up 10 at the moment, down 37 seats. The Telugu Desam doing well in the first round of counting in Andhra Pradesh with 9 seats, CPM 5 and others 13. The breakup of which is the AIDMK 3, that's sweep in Tamil Nadu, the CPI 2, the Bahujan Samaj Party 1, the Jharkhand Mukti Morcha in Bihar 1, making a total for others of 13. But if we look at the leadings, now we have leadings on 412 out of 511 seats. The Congress Eye is leading in 192. Now that's under half, and that looks like the pattern throughout. We still think they will reach about 210 with one proviso which we shall come to later. The BJP's got 96, edging towards the 100 mark. Now they're up 20 since 1989. The Janata Dal still under 50, only 39 seats it's leading in. The CPM leading in 28, down from 1989. The AIDMK 11 and others 46. The breakup of others with Telugu Desam 10, CPI leading in 8 seats, JMM in 5, RSP in 3, the BSP in 1, making a total for others of 46. पूरे भारत में 511 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से अभी तक 220 परिणाम घोषित हो चुके हैं, 220 नतीजे आ चुके हैं। इसमें कांग्रेस आई 126 स्थानों पर विजयी रही है और उसे पिछले चुनाव के मुकाबले 34 स्थान का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 57 स्थानों पर विजयी रही है और उसे अभी पिछले चुनाव के मुकाबले 6 स्थान का नुकसान है। जनता दल 10 स्थान पर विजयी है और पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 37 स्थान का नुकसान है। तेलुगु देशम 9 स्थान पर विजयी है और 8 स्थान का फायदा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 5 स्थान पर विजयी है और 3 स्थान का फायदा है और अन्य 13 स्थानों पर विजय हैं। और एक नज़र रुझान पर लीडिंग्स क्या-क्या हैं इस वक्त पूरे देश में। 511 में से 412 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक कांग्रेस आई 192 स्थानों पर आगे है, यानी 39 स्थानों का फायदा है। भारतीय जनता पार्टी 96 स्थान पर आगे है, यानी 20 स्थान का फायदा है। जनता दल 39 स्थान पर आगे है, यानी 67 स्थान का नुकसान है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 28 स्थान पर आगे है, यानी 2 स्थान का नुकसान है। अन्ना डीएम के 11 स्थान पर आगे है, किसी भी स्थान का फायदा नुकसान नहीं है। और अन्य 46 स्थान पर आगे हैं, यानी 11 स्थान का फायदा है। I think I'll introduce our distinguished panel now. We have Shri Arjun Singh from Congress I, Shri Ram Vilas Paswan from Janata Dal, and Dr. Subramanian Swamy from SJP. You're welcome, gentlemen. But before we come to you, we'll quickly go across to Lucknow
where we have our correspondent Pankaj Well, Pachori. before that, let's have a look at the situation in UP and have a look at the current leadings position in Uttar Pradesh, where we have 57 leadings out of 82. The situation is that the BJP is the #1 party there with 32 seats. That's more than half the seats on which we have information right now. The Janata Dal is trailing behind the BJP with 18. The SJP is picking up 3 seats. That's 3 gains because it's a new party. The Congress I has got 2, down 8 since last time when it did very badly in 1989. The CPM 1 and the CPI 1. And now straight to Pankaj Pachori in Lucknow. लखनऊ शहर में रह कर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रथ विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार श्री कल्याण सिंह और श्री आर.के. गुप्ता दिल्ली में हैं और हमारे साथ यहां पर हैं पार्टी के उपाध्यक्ष राज्य के श्री लालजी टंडन। टंडन जी, पार्टी की इस जीत के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? हमने इस प्रदेश की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए और ये जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए जो पिछली सरकारों ने इसको बर्बाद किया, हमने जनता से जनादेश मांगा था कि एक बार हमको मौका दें सरकार बनाने का। हमें जनता ने वो अवसर दिया है और ऐसा लगता है कि जो जनादेश हम चाहते थे वो हमें प्राप्त हो रहा है प्रदेश में। क्या आपने यह जनादेश एक व्यवस्थित सरकार के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं मांगा था, जहां पर पार्टी इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है? हमने केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए जनादेश मांगा था, लेकिन जो भी जनादेश है, जिस रूप में हमको जनता ने आदेश दिया है वो स्वीकार है। अच्छा, केंद्र की जब बात कर रहे हैं तो क्या आपकी राम राज्य के इस नारे को जनता ने ठुकरा दिया है? अगर ये विषय बहस के हैं, राम राज्य का नारा कभी ठुकराया नहीं जा सकता। राम राज्य के मतलब एक आदर्श राज्य जिसमें हर दबे कुचले छोटे बड़े सबको समान अवसर मिलेगा और जो सबके सुख और कल्याण का काम करेगा, तो ये आदर्श राज्य जो है इसको कभी किसी चुनाव से ठुकराया नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे कि जनता उत्तर प्रदेश में राम राज्य चाहती है और केंद्र में राम राज्य नहीं चाहती? हमें अगर उत्तर प्रदेश में सरकार ने अवसर दिया तो हम जो हमारी राज्य की कल्पना है उसे हम यहां साकार करेंगे, और अगर केंद्र में ये मौका मिला होता तो वहां करके दिखाते। क्या आप कोई गठजोड़ करेंगे? गठजोड़ की राजनीति में भाजपा का ज्यादा विश्वास नहीं है। धन्यवाद टंडन जी। और इसके साथ ही मैं पंकज पचौरी आपको लखनऊ से दिल्ली वापस ले चलता हूं अपने स्टूडियो। उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 57 की जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 32 स्थान पर आगे है और उन्हें 26 स्थान का फायदा है। जनता दल 18 स्थानों पर आगे है और 19 स्थान का नुकसान है। समाजवादी जनता पार्टी 3 स्थान पर आगे है और 3 स्थान का ही फायदा है उन्हें। कांग्रेस आए 2 स्थान पर आगे है और 8 स्थान का नुकसान है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 1 स्थान पर आगे है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 स्थान पर आगे है। There are 2 major contenders for the post of Chief Minister in Uttar Pradesh, Mr. Kalyan Singh and Mr. R.K. Gupta, and both of them are camping in Delhi, according to our correspondent Pankaj Pachori. And Mr. Lalji Tandon, who is a senior functionary in the state unit of BJP in Uttar Pradesh, he says that we had asked for a mandate from the people to run the government, and we seem to be getting that mandate from the people, and the kind of Ram Rajya we wanted to go in for, we will be establishing in UP. When asked that why couldn't they do it in Madhya Pradesh, Mr. Tandon very deftly avoided the question, ducked the question. Prannoy. Mr. Ram Vilas Paswan, if I can start with you, you've been here about 18 months ago on several occasions on this very panel. You're a man of a great stature now and a major leader of the Janata Dal. Who can you really attribute, for example, the victory in Bihar to? Yourself, Lalu Prasad Yadav, VP Singh, or a combination of all 3? बिहार की जो जीत है वो सामाजिक न्याय की जीत है, और जो हम लोगों ने पूरे देश में एक अभियान छेड़ा था, सत्ता को हमने कभी सत्ता के रूप में नहीं लिया, हमने एक वेपन के रूप में लिया था और उसको हम सामाजिक परिवर्तन का एक हथियार के रूप में हमने इस्तेमाल किया। और हमारी ख्वाहिश थी कि जो देश के दलित हैं, जो अक़लियत के लोग हैं और जो
पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनको मिला करके उनको न्याय दिया जाए और दूसरे गरीब लोगों को भी न्याय दिया जाए। और इसमें हम चाहते थे पूरे देश में इस तरह का एक वातावरण तैयार करना, लेकिन हम बिहार में सफल हो पाए और उत्तर प्रदेश में हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने वही काम किया होता जो बिहार सरकार ने किया, या हमारी पार्टी नहीं टूटी रहती तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं उभर पाती। और जो वहाँ सोशल कॉम्बिनेशंस हैं, सामाजिक फोर्सेस हैं, पिछड़ी जाति के, अकलियत के और दलित के, ये तीनों यदि वहाँ भी इकट्ठा रहते तो जो बिहार में हमने जो स्थान हमने पाया है, ठीक उसी अनुपात में हम उत्तर प्रदेश में भी पाते। बिहार में श्री लालू यादव मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन बिहार में जनता दल का राष्ट्रीय नेता कौन है? नहीं, राष्ट्रीय नेता बीपी सिंह हैं। राष्ट्रीय नेता बीपी सिंह हैज बिकम द सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म। बिहार में राष्ट्रीय नेता कौन है? बिहार में भी लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के रथ को बहुत तेजी से चलाया और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और मुझको गर्व भी है अपने मुख्यमंत्री के ऊपर में। लेकिन जहां तक आप देखेंगे पूरे देश के स्तर पर तो बीपी सिंह हमारे नेता हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। अर्जुन सिंह जी, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आई ने क्या पहल की है अभी तक, कल से आज तक? अभी तो ऐसी कोई पहल नहीं की है और पूरे नतीजे आ जाएंगे तभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस पर ही तय किया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। डॉक्टर स्वामी, समाजवादी जनता पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? I am not very surprised by the results. I'm somewhat surprised that the results are below 10. It's a new party, the party organization wasn't there, and as early as March I had told my colleagues in the party that we will not be able to make much of a headway in this election. But this election has not been a success for any party either. But tell me, is it it's a new party? Is it stillborn? Is it the end of the SJP and the Janata Party now? Well, it's not so easy to write this party off. It actually comes out of the Janata Party, and the Janata Party has faced this kind of problem in the past. I'm sure that we'll pick up in the future. We have leaders who enjoy a reputation with the people. It's only a question of putting your managerial machine in order. Are you going to put your managerial machine now behind the Congress eye? No, I don't need to do that. The Congress side doesn't need us. Huh? Well, they'll be looking for any allies, I think. I'm not sure. If they ask you? Well, I will say this, that we'll move heaven and earth to see that the BJP doesn't get anywhere near power, and if Congress side needs our help for that, we'll certainly give it. Well, let's have a look at the leading personalities across the country. Prime Minister Chandrasekhar is leading in Balia in Uttar Pradesh. Maneka Gandhi is trailing in Pilibhit in Uttar Pradesh against her BJP rival. Meera Kumar is behind by over 2,000 votes in Sasaram in Bihar. That's Jagjeevan Ram's old seat and his daughter. And A.R. Antule is leading by over 30,000 votes in Kulaba in Maharashtra. And the royalty Vodayar actually has lost to Mr. Urz in Mysore in Karnataka. That's a fairly surprising result. Now let's have a look at the Madhya Pradesh situation. We have information now on 40 out of 40 leadings. Almost all the seats. These are results. These are final results on all the seats, in fact. So this is the final figures from Madhya Pradesh, one of the fastest to be counting in this election. Congress side 27, that's up 19 seats, that's more than half. The BJP's come next with 12. Between them, they've taken 39 out of the 40, and the one extra seat has gone to the Bahujan Samaj Party. That's quite a remarkable result. Now let's go over to Bhopal for an update and implications of these results. Congress I is back with a vengeance in Madhya Pradesh. Congress Legislature Party leader and former Chief Minister, Mr. Shyamacharan Shukla, is here with us. Mr. Shukla is also the brother of Mr. V.C. Shukla, who's just won in Raipur. Mr. Shukla, how do you explain such a marvelous performance in Madhya Pradesh? Basically, Madhya Pradesh has been always a state where communalism had no place. It was a very strong tradition of freedom fight and support for secular ideals. The 89 elections were a freak elections, and the BJP was successful in hoodwinking the people by making Himalayan promises to the farmers and to the unemployed,
and there was general discontent regarding price rise also. It looks like a hung parliament at the center. What kind of an alliance are you looking for now? No, but let me complete my answer. But this time we have won because of the basic non-performance of the Patwa government and their total failure on all fronts, their arrogance and their autocratic behavior, their attitude towards the farmers, the working class, which was very callous and oppressive, and their lack of sympathy for everything, and there was no progress in any development work for the last 1 year. Do you think the Patwa government will be forced to resign over this issue, or at least Mr. Patwa? We are demanding that Mr. Patwa should resign and his government should go. In fact, the Vidhan Sabha should be dissolved. That's the verdict of the people, since it's a massive mandate against them, and this is sort of a vote of no confidence. In fact, when the Panchayat elections were on, we were expecting this kind of result even then, because the people were thoroughly disillusioned even by that time by the performance of this government. And also this time, the factor that people realized that there should also be a stable government and a good government at the center to tackle the problems of the country. That was also one factor. Now that it looks like a hung parliament at the center, what kind of alliances are you looking forward to? In the hung parliament, only like-minded parties can come together. Mr. Lalu Yadav just recently said that if a government has to be formed at the center, it must be either with the help of NF or LF. Do you agree? It's too early to say which political forces will come together, but naturally those political forces who are basically secular and believe in the progress of the country, want to fight the communal menace in the country, they will come together. Well, NF has a fairly secular image. Do you think you can accept them? Who? The NF. National Front has also got a very bad image so far the casteism is concerned. So we might have to have a selective support. Well, but thank it's you. too early to say. This is Hemant Kumar in Bhopal, handing you over to New Delhi. मध्य प्रदेश में जो 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें तमाम 40 जगहों पर से चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। जो अंतिम तालिका है वो इस प्रकार है। कांग्रेस 27 स्थानों पर विजयी रही है 40 में से, यानी उसे 19 स्थान का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 12 स्थान पर विजयी रही है और उसे 15 स्थान का नुकसान हुआ है। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 1 स्थान पर विजयी रही है, 1 स्थान का ही फायदा हुआ है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में दोबारा पैठ हो चुकी है। श्री श्यामाचरण शुक्ला जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में हमेशा से ही सांप्रदायिकता की जगह नहीं रही है और सन 89 के चुनाव जो पिछले चुनाव थे वो अनोखे चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने श्री शुक्ला के मुताबिक झूठे वायदे और झूठे सपने दिखाकर लोगों को धोखा देने में सफलता हासिल की। इस दफे कांग्रेस जीती है और पटवा सरकार के निकम्मेपन के कारण और हर मोर्चे पर पटवा सरकार के फेल होने के कारण। श्री शुक्ला का कहना है कि हमारी मांग है श्री पटवा इस्तीफा दें और ये जनादेश एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और लोग केंद्र में भी स्थायी सरकार चाहते हैं। केंद्र में त्रिशंकु संसद की स्थिति में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस नेशनल फ्रंट का राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन लेगी, तो उनका ये कहना था कि हालांकि राष्ट्रीय मोर्चा की छवि धर्मनिरपेक्षता की जरूर है, लेकिन जातीयता का भी दाग उनके दामन पर है। और श्री लल्लू यादव के बारे में उन्होंने ये कहा कि अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस प्रकार की राजनीतिक शक्तियां आगे आएंगी और केंद्र में कैसे सरकार बनेगी। Mr. Arjun Singh, I want to press you on a couple of points because the whole nation now is really focusing its eyes on the Congress side. With every minute move you make will be under a microscope. I'm sure most of you and the party were up all night last night. There must be a lot of developments. Can you give us any news on the developments in the party in the light of these results? Number one, you are going to form the next government. It's pretty clear now. Have you, for example, set even a date for the meeting of your party, of your parliamentary party, to elect a leader? The parliamentary board is likely to meet this evening. This evening? Yes, and then the rest of the modalities will be fixed. And so far as the... What kind of modalities would you be talking? I mean the time when the elections are to be held or what, those are the modalities. But when would you think approximately in a kind of rough time horizon, by tomorrow kind of thing? I think before 20th. Before 20th, before Parliament actually meets. Yes. Parliament is not meeting on 20th. On Thursday it was, is it? No, the Parliament is being constituted. Okay. आपको 40 या 50 सांसदों की जरूरत आपकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए हो सकती है।
इतने सांसदों का समर्थन जुटाने के लिए कौन से विकल्प, कौन से ऑल्टरनेटिव आपके सामने हैं? किसी दल का एक मुश्त समर्थन प्राप्त करना या फिर दूसरे दलों में सेंस लगाकर वहां से लोग लेना? देखिए, डिफेक्शन करा के लाने का तो कोई इरादा कांग्रेस का नहीं है, और मैंने कल भी बात कही थी, आज भी वो है, क्योंकि अभी तक पूरे नतीजे आए नहीं हैं। तब तक ये भी नहीं कहा जा सकता कि 25 की ज़रूरत होगी कि 50 की पड़ेगी। इतना बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी दो बातों को बहुत अंडरलाइन करती है। पहला तो ये कि जो सांप्रदायिक जहर देश में घोला गया है, उसके जो भी परिणाम निकले हैं पिछले साल 1.5 साल में, उससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। उस जहर को तो हमें देश के बॉडी पॉलिटिक्स से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की एकता और स्वतंत्रता भी उस पर निर्भर करती है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो चाहे आज हम कोई अरेंजमेंट करें, आखिरकार करके देश टूटेगा। दूसरी बात यह है कि मैं पासवान जी से उस हद तक बिल्कुल सहमत हूँ कि एक नई सामाजिक राजनीतिक चेतना सारे देश में आई है। इस चेतना का अभी तक कांग्रेस ही प्रतिनिधित्व करती रही, और उसके लिए कांग्रेस ने कई समय समय पर कदम भी उठाए। शायद उन्हें पर्याप्त नहीं माना गया, इसलिए बहुत जगह से ऐसे नतीजे आए हैं। मेरी नज़र में और कांग्रेस की नज़र में इस सामाजिक राजनीतिक चेतना को फिर हमारी नीतियों का केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, और वही नीतियां आगे चल के फिर से देश के अंदर उस एकता को पैदा करेंगी जिनसे अपने आप सांप्रदायिक और इस तरह की विध्वंसनकारी शक्तियां किनारे हो जाएंगी। Would it mean a homecoming for some ex-Congress people or some people who have got ideological affinity with Congress? The homecoming part is something which cannot be as if the door is open and you just walk in. That is not the position, and Your credentials will be checked at the door. well, this is a security conscious Security era. conscious. So you have to get clearance. Mr. Subramanian, Swamy, how do you see events unfolding? One of the things which both of you just mentioned, which I'm not clear, I'm sure viewers are not clear. Parliament will be constituted, Yes. but will not meet. What exactly will happen? When will Parliament meet? What is the kind of schedule we are talking about? The election commissioner has to go to the president and say the elections are completed and Parliament has been constituted. That will happen in, say, the next 48 hours? Yes, he has to do it by 20th because the president has given him that kind of informal. So then it's constituted. And then what happens? Then after that, a date will be fixed once the leader is been sworn in. That is the Prime Minister has to be sworn in, and then he will fix the date of Parliament. When it actually sits. Yeah. Because the leader of the House has to do that, and then the senior most member of the Lok Sabha will act as a temporary speaker before a speaker is elected. Do we understand that the Parliament cannot meet without a Prime Minister? Of course, it cannot. It cannot. It cannot. It must have a leader of the House who has to be the Prime Minister. I see. How do you think, who's going to be the next Prime Minister? Well, it has to be from the Congress Party, and the Congress Party is a... And you know the Congress Party pretty well. I think you've been watching it closely over the last few years. But Arjun What's Singh, your best guess right now? Arjun Singh knows better. My guess would be that the Congress Party will elect a leader very smoothly, and they By have a long consensus tradition. or by... Yes, I think it will be by consensus. Not This is my by- guess. Yes. But I really don't want to tread in the territory of Mr. Arjun Singh. But for what little I know of the Congress Party, I think they, in times like this, they get together. And do you think there will be defections from the Janata Dal? Well, I don't want to make predictions on another party, but frankly speaking, I think the Janata Party has, Janata Dal has a real crisis of identity just now. Mr. Paswan, do you have a crisis of identity? हमारी पार्टी आइडियोलॉजिकल रास्ते पर चल रही है, और जब कोई पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी होती है तो उसमें कोई क्राइसिस नहीं होता है। क्राइसिस तब होता है जब व्यक्ति विशेष का महत्वाकांक्षा जागता है। But is all members of your party so firmly committed to the same ideology? बिल्कुल, All members? बिल्कुल, जो नहीं थे वो चले गए। क्या आप इस राय के हैं कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे दें? हालांकि आरक्षण के मामले पर कांग्रेस में और आप में थोड़े मतभेद हैं, लेकिन क्या आप इस राय के हैं कि सरकार बनाने के लिए, क्योंकि देश को एक सरकार चाहिए, कांग्रेस को समर्थन दे दें? देखिए, हम तो सरकार में थे ही,
और हम सरकार में 5 साल तक रहते यदि हम बुनियादी मुद्दे को नहीं छेड़े रहते। नहीं, अब हमारी सरकार गई सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म और पावर टू दी पुअर के सवाल पर। अभी जैसा कि अर्जुन सिंह जी ने भी ठीक कहा कि नक्शा साफ नहीं उभर रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी सरकार, पिछले चुनाव में आप देखेंगे 89 में और उसमें कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है, तो कोई भी सरकार बिना राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी मोर्चा के सहयोग से नहीं बन सकती है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपकी राय भी ये है कि कांग्रेस आई को समर्थन देना चाहिए सरकार बनाने के लिए? अभी हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कांग्रेस आई का हमेशा विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई को एक को सांपनाथ, एक को नागनाथ माना है। तो इसी परिस्थिति में जिन बुनियादी मूल्यों के लिए हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, उन बुनियादी मूल्यों पर यदि कहीं कुठाराघात होगा तो हमारे जैसे लोग उसमें कभी सहमत नहीं होंगे। और अगर ना हुआ कुठाराघात? अब वो तो मैंने कहा ना कि मैं रामविलास पासवान अकेले पार्टी नहीं है ना, पार्टी का काम है उसका निर्णय लेना, लेकिन मैंने अपना व्यूज आपको। इट्स एन ओपन क्वेश्चन। Yes, let's go to the party If it is an headquarters. open question, then there is a crisis of identity. Well, let's go to the party headquarters and see if there's a real crisis. Let's see at the Janata Dal headquarters where Indranil Banerjee is waiting and see if there's any more information. Many liberal-minded people who supported the Janata Dal because it talked about the poor and the underprivileged must be a little disappointed. We have with us Swamy Agnivesh, a prominent social worker who joined the Janata Dal and contested the Bhopal seat where he lost his deposit. Swamy Agnivesh, ऐसा क्यों हुआ भोपाल में? भोपाल में पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से राजनीति को सांप्रदायिक बना रखा था और चुनाव के वक्त जहां पर वो हिंदू वोटों के लिए खड़े हुए थे, वहां कांग्रेस पार्टी ने नवाब पटौदी को फील्ड करके इशारा कर दिया कि मुस्लिम वोटों के बल पे वो चलना चाहते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो माहौल बना उसको मैं बदल नहीं पाया और इसलिए आखिरी में चल करके ध्रुवीकरण ऐसा हुआ कि मेरे जैसे आदमी को न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो आपके पार्टी ने ये गरीबों और बैकवर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, पर अब तो लगता है सिर्फ बिहार में ही और यूपी में लोग इसको मान लिए, बाकी जगह कहीं नहीं माने। देखिए, बिहार में खास करके पिछले कई सालों से अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई चल रही है, तो वहाँ दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का एक ध्रुवीकरण हुआ, एक ताकत बन करके उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में भी और ज्यादा ये हो सकती थी बशर्ते मुलायम सिंह यादव। पर आप ये नहीं मानेंगे कि जनता दल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप की एक फेलियर है? नहीं, लीडरशिप की कोई फेलियर नहीं है। लीडरशिप ने मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया और उन मुद्दों के लिए बड़ी से बड़ी जो कीमत थी वो चुकाई। पर आपको लगता है कि जनता दल विल सर्वाइव, विल इट आफ्टर दिस डिफिकल्टी? मुझे लगता है कि जो भविष्य है इस देश में, जो भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने की थी कि आने वाला राज्य जो है वो शूद्रों का राज्य है, तो उस हिसाब से जनता दल ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है समाज के शूद्रों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासी। आप ये नहीं मानते कि शायद ये हिंदुओं का राज है? नहीं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ब्राह्मणवाद सिर उठा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय हुई है पूरी ताकत लगाने के बावजूद, जो उम्मीद कर रहे थे हम सरकार बनाएंगे, तो वो उनका जो असली था कि हिंदुओं ने भी, जो हिंदुओं में भी समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस प्रकार का कोई थियोक्रेटिक रेजिम नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक आशा की किरण है। अच्छा, अब तो देख रहे हैं, लग रहा है कि हंग पार्लियामेंट होने जा रहा है, ये देश के लिए विल इट नॉट बी बैड? नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि अब असली राजनीति इस देश में शुरू होने वाली है। मुद्दों के ऊपर, जनता के सवालों के ऊपर अब होगी। अब इससे पहले या तो कांग्रेस और कांग्रेस का कोई एक नेता, उसके नाम पर सारी राजनीति चलती थी, उसके फॉर एंड अगेंस्ट। अब सीधे सीधे जनता के सवालों पर राजनीति होगी। ये देश का भविष्य मुझे उज्जवल। Thank you, Swamy Agnivesh. And with that, this is Indranil Banerjee taking you back to the studios. Swamy Agnivesh blames the BJP for communalizing the situation and polity in Bhopal, where he has not only lost an election, has forfeited his deposit also, and he says that Janata Dal has identified itself so completely with the backwards that the future belongs to Janata Dal, and he says that the real issue-based politics will start now in this country. Prannoy. Vinod, let's go quickly across to West Bengal, and before doing that, let's have a recap of the kind of latest results there, both at the Assembly and at the Lok Sabha level. At the Assembly, we have information on 179 out of 294 seats. The CPM has got 107 out of 179. That's over 50% on its own. The Congress side, 27. The Forward Bloc, which is an ally of the CPM, 22. The
RSP 11, another ally of the left front, and Independence 3, so and others 9. Now, of the others, there's 3 which forms another part of the left front, the Janata Dal 1, again a part of the left front, making a total of 9 for others. That shows that the left front has a clear majority, and in fact at the moment the CPM is heading for a majority on its own. Leadings in West Bengal Lok Sabha, out of 42 seats we have information now on 37. The CPM is leading in 21 out of that 37, that's 3 down from last time. The Congress is leading in 9, that's up 5, they'll be pleased with that performance. The RSP is leading in 3, same as last time, CPI 2, Forward Bloc 2. And that's the situation in West Bengal. Let's go across for an update on the latest information from Kamini Soni in Calcutta. Now, before we go to Calcutta, Prannoy, I've been asked to do a recap because Kamini is not ready. Okay. विधानसभा क्षेत्र 294 है पश्चिम बंगाल में, उसमें से 179 की सूचना जो हमारे पास है उसके मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 160 स्थानों पर आगे हैं और पिछले चुनाव के मुकाबले उन्हें 8 स्थान का नुकसान है। कांग्रेसाई 27 स्थानों पर आगे और 3 स्थान का फायदा है। फॉरवर्ड ब्लॉक 22 स्थानों पर आगे और 5 स्थान का फायदा है। आरएसपी 2 स्थान पर आगे है, 2 का नुकसान है। निर्दलीय 3 पर आगे हैं और 3 का नुकसान है और अन्य 9 जगहों पर आगे हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 42 हैं, 37 की सूचना हमारे पास उपलब्ध है। उसके मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 21 स्थान पर आगे है और 3 का नुकसान है। कांग्रेसाई 9 स्थान पर आगे है और 5 स्थान का फायदा है। आरएसपी 3 स्थान पर आगे है और कोई फायदा या नुकसान नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 स्थान पर आगे और 1 स्थान का नुकसान है और फॉरवर्ड ब्लॉक 2 स्थान पर आगे है, किसी भी स्थान का फायदा या नुकसान नहीं है। एंड इफ दी ओबी इज रेडी, कुड वी गो अक्रॉस टू कैलकाटा? नो, आई डोंट थिंक। We can, well, let's have a question first because I think that's as interesting, if not more, in fact. Mr. Subramanian Swamy, at the moment with this kind of uncertainty, over the next week, should the government take any decisions at all? It's been a controversial point over the whole election campaign, but should there be any decisions now? Well, the President is there to guide in these matters. There are certain decisions you have to go on taking because you want the country secure, and those vital decisions even the President will not object. But the ultimate guardian in such a situation is the President. And I don't think we have taken any decisions. We have had some controversy during the period of the elections, but otherwise I think the President will see to it that the decisions that have to be taken will be taken and nothing more. Okay, if not decisions, are you going to propose some recommendations before you go out of the office? No, whatever recommendations we had to make, we have made before the results of the elections came out. Like, what are the recommendations? Well, I think we have well, I think it's better not, I should not make these announcements here. It should be made by the Prime Minister. Feel free, please. No, okay, I think we can go across to Calcutta in that case. We'll press you later after that. Let's go to Kamini Soni in Calcutta. Of the latest figures that I have, in the 49 assembly seats declared, the left front is leading in 37, the Congress I in 9, and the others 3. Mr. Jyoti Basu is leading in Satkacha by over 18,000 votes. Mamta Banerjee is leading by a whopping 50,000. Mr. Siddharth Shankar Rai has won the Chaurangi seat by over 17,000 votes. I have with me Mr. Miman Ghosh, a member of the Central Committee and State Secretariat of the CPIM. Biman Babu, your party seems to be all set to sweep the state again. Why do you think it has been able to maintain such a strong hold over West Bengal? Since we are following our program and maintaining close link with the people, all time we are explaining our difficulties and hazards in implementing our program to the people. So people, they know that we are not telling lie. What we face trouble, we explain to them, and always we are trying to do the program in the interest of the people. And the pro-people policy has given us such opportunity to come again in the fourth. Do you think that your party has been able to maintain a stronghold here because it is perceived more as a regional party than a communist party? Absolutely wrong. This is not a regional party. Our party is the All India party, though it's fact that we are maintaining a strong hold in West Bengal for a pretty long period. That also we are following the policy for the last 14 years, the people-oriented policy through panchayat in the rural area,
And in the urban area also, we are involving people in implementing our program. But don't you think the party has neglected the urban areas to a certain extent? For example, the park crisis, the roads? No. Since we are running in short of fund, developmental activities in the metropolitan cities, we get less allocation of money from the central government. But yeah, but every state has the same problem, but West Bengal seems to be behind the other states in these areas. So far I know, the metropolitan cities like Bombay, Delhi and Madras, our allocation of money less than the other cities. Even then, we are moving with the old city. We are trying to remodel old city. So it's not a question of magic to beautify our city by a moment's initiative. Why do you think the left front has not done so well in Kerala? That I can't pass comment just now. We shall have to gather information, get reports from Kerala State Committee. Unless we get what has happened there,